Good morning, students. After a very long period of time, now we are again moving further in our physics curriculum. This particular class is related to gravitation. Our today's point of interest is gravitation, and this video lecture is especially related to class 9th and 11th. तो ग्रेविटेशन एक ऐसी फिनोमेना है, ऐसी फिजिकल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है जो आपके चारों ओर हर समय होती रहती है. आप इसको ऑब्जर्व करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द ग्रेविटेशन इज क्वाइट विजिबल. सो ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपने कई स्टोरीज पढ़ी होंगी. द मोस्ट फेमस स्टोरी वाज रिलेटेड टू न्यूटन कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, बैठा था, सो रहा था, क्या ही पता क्या कर रहा था. बट सडनली एन एप्पल ड्रॉप्स और उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये कहीं भी जा सकता था. व्हाई इट इज attracted by the earth to the downward, and then he started to study over it, and he finally concluded its gravitation law, which is also known as universal gravitational law. But before the Newton, if we go through the ancient Indian scientists, तो न्यूटन से भी कई साल पहले द फेमस इंडियन साइंटिस्ट दैट वाज आर्यभट्ट, who already gave the idea of gravitation, in which it is in Hindi it is called Gurutwakarshan. So today we are going to discuss about gravitation. So first you should understand that gravitation is the property of massive bodies. Okay, gravitation is the property of massive bodies, means those bodies who have mass, only those bodies can produce the gravitation. So in the universal law of gravitation, which is given by Newton, it is being said that if there are two masses, one is m1 and other is m2, they are separated by a finite distance r. They are separated by a finite distance r. अगर उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉडीज के मास की मल्टीप्लिकेशन के, and it will be inversely proportional to the square of the distance between them. So basically the gravitational law which is given by the Newton follows inverse square law. So if you combine these two equations, you get the equation F proportional to m1 m2 by r square. So this is the universal law of gravitation. And as you know that if there is a sign of proportionality, so while removing the sign of proportionality, there will be a constant which is called capital G, or basically known as universal gravitational constant. So this is capital G, which is universal gravitational constant, and m1 m2 times r square. So you get this sort of formula. You get this sort of formula. That is F equals to capital G times m1 m2 by r square. So this is Newton's universal law of gravitation. Newton's law of gravitation. Law of gravitation. So according to this law, according to Newton, if there are two bodies in the universe having mass m1 and m2 separated by distance r, then definitely there will be a gravitational force between them. अब इस लॉ को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम महसूस होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने ही क्लास में अपने ही साथ के किसी क्लासमेट के साथ बैठे होते हो, आपकी बॉडी का भी अपना एक मास है, आपके फ्रेंड की बॉडी का भी अपना एक मास है, लेकिन आप दोनों ही अपनी जगह बैठे रहते हो, कभी भी एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट नहीं होते. वहीं दूसरी ओर अगर आप अर्थ की सरफेस पर खड़े हैं एंड इफ यू जंप, देन ऑटोमेटिकली यू कम बैक टू योर इनिशियल पोजीशन. आप नीचे गिरते हैं, है ना. आप किसी बॉडी को, किसी भी स्टोन को अगर आप किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, सो इट विल नॉट रिमेनिंग इन द एयर, ये नीचे आता है, अर्थ पर गिरता है.
इट मीन्स अर्थ तो अट्रैक्ट कर रही है, बट वाई वी आर नॉट अट्रैक्टिंग टू ईच अदर. So that's why I initially told you that gravitation is the property of massive bodies. And massive bodies means the skyly planetary massive bodies. ऐसे massive bodies जिनका मास हमारे मास के कंपैरिजन में कई गुना बड़ा हो, like moon, earth, sun, planets, stars, Mars, Jupiter, like this. सो रिमेंबर दैट कि ग्रेविटेशन जो है वो बहुत ही हैवी मैसिव बॉडीज की प्रॉपर्टी है. आपके टेबल पर अगर दो सेब रखे हैं तो वो सेब आपस में कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो अपनी ही जगह पर रखे रहेंगे. लेकिन हाँ, अगर उस सेब को आप किसी भी बॉडी की किसी हैवी बॉडी लाइक अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में ड्रॉप करते हो, देन डेफिनेटली इट विल अट्रैक्टेड बाय दैट मैसिव बॉडी. नाउ moving ahead, one more important type of discussion, that gravitation is a central force. Okay, gravitation is the central force. So let me show you that what is the meaning of that. So here I am going to take two circles, basically two objects. Okay, here it is. So suppose there is a one mass this and another is this. This body have mass m1, this body have mass m2, and there are two distances between them. One is circumference of one circle to circumference of other, and another distance is from the center of one circle to the center of other circle. Yeah, suppose one distance is this and one distance is this, center to center. Okay, let's change the color of this second line. Here it is. Okay, now so suppose this line is somehow AB, and the center line is suppose CD. So in the gravitational law, suppose this is called R1, this is, yeah, suppose this is called R dash, this is called R, CD equal to R, and AB equals to R dash. अब ग्रेविटेशन लॉ में क्या कहा था कि भाई फोर्स जो बराबर होगा वो बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. तो डिस्टेंस यहां पर हमें R डैश लेनी चाहिए, R डैश का स्क्वायर लेना चाहिए और R का स्क्वायर लेना चाहिए. दोनों ही डिस्टेंसेस दोनों ही मासेस के बीच की दूरी को बता रही हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट that gravitational force is always acts towards the center of the object, towards the center of the body. Okay, so if there is a gravitational pull applied by first object on second one, then first object attracted the second one towards its center, and second object is also attracting the first object towards its center. So that's why I'm telling you that gravitational force is a kind of central force. So distance between two objects, whenever it is being said that distance between two objects, so always remember that that distance is actually measuring from the center of the objects. ठीक है, तो जब हम ग्रेविटेशन कैलकुलेट करते हैं, जब हम ग्रेविटेशनल पुल को कैलकुलेट करते हैं किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो जो डिस्टेंस होती है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच की, वो डिस्टेंस उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट होती है, या ऐसे समझे कि सेंटर से कैलकुलेट होती है.
इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा फैक्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force is a central force. ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमेशा एक फिक्स्ड सेंटर से ही पास होगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. नाउ let us take an example of something else. Okay, suppose let's take an example of earth and any other body. Okay, so moving on. So let us consider that this sphere is representing the somehow earth. Okay, this is representing the earth, and mm, mm, and suppose this is an object, placed on the surface of the earth. So at this situation, what will be the center force, what will be the gravitational force? Let's calculate it. Suppose earth has the mass capital M. This is the mass, or we can say the mass of earth is capital M and the mass of this cylindrical object is small m. Now what is the distance between object and the earth? Obviously the radius of the earth, okay, equal to the radius of earth. So distance between two objects is basically equal to radius of the earth. अब अगर हम सेंटर फोर्स को ध्यान दें तो हमें ये डिस्टेंस इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के भी सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट करनी चाहिए. बट in comparison to earth, the distance from center to the surface of earth is negligibly small in comparison to the radius of earth. That's why we are neglecting that length. Okay, so suppose the radius of earth is r, capital R. Radius of length is radius of earth is capital R. So in that situation the force is F equals to G times small m times small capital M by R square. But as we know that weight of body is also acting towards the downward towards the center of earth, and that weight is also is somehow the force which is equals to small m times acceleration due to gravity, that is G mg. So let's equate these two equations. R square equals to mg. So that is m can be cancelled from both sides, and now from this relation we can get the relation between small g and capital G. This is the very famous relation which you had also studied in class 9, and the students of class 9 who are watching this video, they can understand from here. So क्लास 11th के स्टूडेंट्स इसको पहले भी 9th में पढ़ चुके हैं और क्लास 9th के स्टूडेंट्स तो यहाँ पढ़ ही रहे. So this is the basic fundamental relation between small g and capital G. Always remember, small g is acceleration due to gravity, and capital G is universal gravitational constant. Now, so there will be definitely there is a difference between G and G. So for class 9th and for class 11th, there is also a very important term that what is the difference between small g and capital G. So let us discuss on them also.
Okay, so one side we make the column for G, other side for capital G. So one thing is that small g is different for different planets, different for different stars. Okay, different for different stars, comma planets, etc. है ना? यानी अर्थ के लिए स्मॉल जी की वैल्यू सम कुछ और होगी, कुछ और क्या, वी नो दैट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एंड फॉर मून ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और है, मार्स के लिए वैल्यू कुछ और है. हमें अच्छे से पता है दैट इन नाइन्थ क्लासेस और इन अर्लियर क्लासेस वी हैड डिस्कस दैट द ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 times of the gravity of earth. So that is the thing which is we have to consider here. Now if we discuss over the value of capital G. So capital G is a universal gravitational constant which is constant in throughout the universe. No matters at what planet you go, if either you are on Earth or either on your moon or on Mars, the capital G value is same. So capital G is same at all places. बट रिमेंबर दैट g कैन बी वेरी, स्मॉल g की वैल्यू जो है वो वेरी कर जाती है. इवन किसी प्लेनेट पर भी अलग अलग जगह पर स्मॉल g की वैल्यू अलग अलग हो सकती है. ये चीज ध्यान रखिएगा, ये फैक्टफुल चीज है. इसके अलावा इसके यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. भाई स्मॉल g की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल G की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. Okay, so ये values हैं, इनकी यूनिट की अलग अलग values हैं. So of course if the values of unit is different then definitely those quantities are different. तो आपको ये चीज बहुत clearly पता होनी चाहिए that there is a difference between small g and capital G. Small g is acceleration due to gravity and capital G is universal gravitational constant. So I hope that in this video lecture we had get little bit idea about gravitation, how gravitational law works, and Newton's law of gravitation and what are their facts. Now in next lecture we will discuss about that at what condition gravitational law fails. Okay, so till then you can like this video, comment if you have any type of query, and if you are first time watching this video on this channel then you can subscribe also. Okay, thank you learners, thank you students.